Good morning, students. Please join this live class. Science class 10th, chapter Control and Coordination. This is the second part of this chapter. This is the second class for this chapter. Please join. Previously, in last class, we had started this chapter and we had studied a lot of things. What is control? What is coordination? Which system is responsible for control and coordination? Obviously, nervous system and endocrine system. Okay, what are the parts of nervous system? What is brain, spinal cord, neuron? What is the function of neuron? How does a neuron work? Nerve cell कैसे काम करती है? Okay, how do various organisms give response? How do animals give response? What is stimulus? Okay, and how do a nerve cell, how do nervous system help in producing response? What is reflex action? What is reflex arc? Okay, all of these things you have studied in last class. If you have not attended that class, go to that video and watch. Now today we are going to proceed control and coordination. First of all, I told you that coordination is carried out by two systems, nervous system and endocrine system. Nervous and endocrine system. So nervous system you have studied in last class. So let's go through endocrine system. What is endocrine system? So let all the students join this class. Endocrine system. What is endocrine system? Endocrine system basically consists of endocrine glands. Endocrine glands which secrete hormones. So what is the name for endocrine system? Endocrine system. Endocrine system is a system of endocrine glands. There are various glands in our body which secrete hormones. Hormones. What are hormones? Hormones are some chemicals. These are some chemicals, chemical messengers, which play a very important role in our body. They act like a chemical messengers. They produce response. They produce response to stimuli. They are responsible for all the processes, many processes in our body, metabolism in our body. Okay, control and coordination. So hormones are chemicals that play an important role in various processes in our body. Okay, so what are endocrine glands? And what is the need for endocrine system? I told you what is stimulus. Stimulus is any change in environment that causes reaction. Okay, anything to which you react. Okay, whatever you see in nervous system, you respond. From receptors, the information is passed to brain. Okay, you studied that. Like you see something, you touch something. Okay, from that the system control begins. So, what is the need for endocrine system? Endocrine system is other thing.
For example, whenever you see a tiger, I gave this example in last class too. Whenever you see a tiger, you react. How do you react? First, you see that tiger. Okay, this message passes to the brain, and brain again sends back message to your muscles to run. Okay, but all this was possible just because that information, just because the sensory neuron and motor neuron, just because that are you responded? No. When you respond, when you react, various processes come into action in our body. Okay. In a nervous system, only electrical impulses can be helpful, but neurons are not present in entire body. Okay, neurons, electrical signals cannot be passed through each and every part of the body. जो electrical signal होते हैं, neurons होते हैं, they cannot pass information to every cell. Okay, but chemicals, hormones, these reach each and every cell of our body, so that the each cell, the whole body can react. For example, one of the hormones is adrenaline. Adrenaline is a hormone. Okay, what is this? What is its function? See, whenever you see something awful or something scary, or when you are very scared or in anger, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, गुस्से में होते हो या डरे हुए होते हो, then this hormone is released in our body. क्यों? Because when you are in stress, okay, जब आप स्ट्रेस में होते हो या फिर फियर में होते हो, at that time our body need to react according to that. For example, we need high supply of oxygen. When we are in stress, when we are in emergency situation, we need high amount of oxygen. Plus, we need high breathing rate. ऑक्सीजन भी हमें ज्यादा चाहिए, ब्रीदिंग रेट भी हमें ज्यादा चाहिए. थर्ड, देयर शुड बी मूवमेंट इन आवर मसल्स. जो भी हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, यू हैव स्टडीड स्केलेटल मसल्स इन 9th class. Skeletal muscles which cause movement, which are attached to your bones, muscles which are attached to your bones, skeletal muscles. So you need movement, fast movement, because at the time of emergency, if you did not react, अगर emergency की situation में आपने react नहीं किया, आप नहीं भागे या फिर कुछ react नहीं किया, then your life might be in danger. So in emergency situations, you need all these things, and this hormone is useful for that. What actually happens when adrenaline is released in our body? Whenever you are in stress or emergency situation, this hormone is released in our body. Okay. What happens when this hormone is released? Oxygen supply is increased. Oxygen supply increase हो जाती है. It means that the heartbeat, जो heartbeat होती है, that is also increased. That happens जब भी आप fear में होते हो, stress में होते हो, आपकी heartbeat ज़्यादा होती है. जब भी emergency situation में होते हो, आपकी heartbeat is generally more than your general heartbeat. Why? Because our body needs high amount of oxygen in that situation, so heartbeat becomes high, so that oxygen supply becomes more. Second, when adrenaline is released, breathing rate also increases. Third, when adrenaline is released, blood circulation, the flow of blood, okay, the blood supply happens more to your skeletal muscles rather than your skin. Okay, जो blood supply होती है ज़्यादा हो जाती है आपकी skeletal muscles से, so that you can move. So that's how hormones are very important.
So what are the different, you have understood the significance of endocrine system. Endocrine system का क्या significance है? Because these chemicals can reach each and every part of the body, okay, and we can respond quickly. So what are the different glands? Different endocrine glands in our body. Let's see. There are different glands in various parts of our body, from head to neck to legs. There are different parts. See, this is your brain. All right. In brain, there are some endocrine glands. First name is pineal gland. Pineal gland. Pineal gland is present in our brain. Another gland is, you also studied in brain diagram, pituitary gland. Pituitary gland. This is also present in brain. This is your cerebrum, and pituitary gland is present here. Pineal gland is also present in brain. Okay. Hypothalamus is also a gland. Hypothalamus is also present in brain, right? Hypothalamus. Hypothalamus. These three things you studied in brain diagram. These are endocrine glands. Okay, so in brain, 3 endocrine glands are present. Now you come towards neck. This is your mouth and this is air pipe and food pipe. In your neck, a gland is present which is known as thyroid gland. This is thyroid gland in your neck. Then you come more downwards and you have studied about pancreas. In which chapter you studied about pancreas? Life processes, digestive system में आपने pancreas पढ़ा था. ये आपका esophagus था, इधर stomach और pancreas इधर था, आपको याद होगा. So इसमें हमें endocrine gland में pancreas हमको बनाना. So pancreas की shape कुछ ऐसी थी, right? So pancreas gland, pancreas is also a gland. Pancreas. These all are endocrine glands, right? You studied kidney. Kidneys are 2, right? 2 kidneys are present. Near kidney, there is another gland attached, which is known as adrenaline gland. This is your kidney mass. Okay. Here, to each kidney, adrenaline glands are present. Adrenaline. Adrenaline. This is another. Okay. Pancreas, adrenaline. Now, in excretory system, this was your digestive system part. In excretory system, in males and females, there are different glands. In males, there are testes, males, and in females, there are ovaries in females. These are the parts of reproductive system of males and females. So in reproductive part, there are 2 glands present, testes in males and ovaries in females. So these are the various glands, endocrine glands. So what are endocrine glands? Endocrine glands are those organs which secrete hormones, which release hormones. Okay. So all of these glands secrete its own hormone. So let's first start with pituitary gland. Which hormone is secreted by pituitary gland? Pituitary gland secretes growth hormone.
growth, the growth of your body, the dwarfness, कुछ लोग बौने हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा लंबे हो जाते हैं, that is due to pituitary gland. This is a growth hormone. All right. Hypothalamus जो होती है gland, that controls this gland. Hypothalamus controls pituitary gland, and pituitary gland is known as master gland. Master gland क्यों बोलते हैं pituitary को? Because pituitary gland controls the functions of all other glands. जो ये pituitary gland है, this is the master gland because this controls functions of all other glands. Whatever I am saying, listen to each line carefully. Okay, and you can make notes too. Pineal gland, तो pituitary gland का फंक्शन हो गया ग्रोथ हार्मोन. pineal gland का जो हार्मोन होता है वो होता है मेलेटोनिन या फिर सेरोटोनिन. ठीक है, you need not remember the names, but you should know the function of pineal gland. Pineal gland is responsible for your sleep cycle. What is sleep cycle? Sleep cycle means you sleep at a fixed time and you wake up at a fixed time. सुबह आपका जो रेगुलर टाइम बना हुआ है उसी टाइम आप उठ जाते हो और रात को उसी टाइम आपको नींद आ जाती है. That is sleep cycle. So pineal gland controls sleep cycle. If there is some problem in pineal gland, your sleep cycle will disturb. Okay. Hypothalamus controls the pituitary gland. Okay, next gland is thyroid gland. See, what is the function of thyroid gland? Thyroid gland is responsible for metabolism. Metabolism होता है all the chemical reactions in our body. In your body जो chemical reactions हो रही हैं, जो metabolism हो रहा है, that is controlled by thyroid gland. Metabolism of carbohydrates, fats, proteins. Okay. So thyroid gland controls metabolism of various nutrients like fats, carbohydrates, proteins. And the name of hormone is thyroxine. Thyroxine. Okay. Thyroxine is the hormone and thyroid is the gland. Thyroid is the gland and thyroxine is the hormone. Okay, so thyroxine hormone is responsible for metabolism of fats, carbohydrates and proteins. Okay. Next hormone, next part. See what is the next part? Pancreas. What is the function and hormone of pancreas? पेनक्रियास कहां पर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पेनक्रियास पढ़ा था. पेनक्रियास क्या करता था? पेनक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. Also it has many enzymes. Okay, so basically you are studying about endocrine glands. There is another kind of gland which is known as exocrine gland. Exocrine gland. So exocrine glands जो होती हैं, एंडोक्रीन तो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और एक्सोक्रीन ग्लैंड जूसेस रिलीज करते हैं. फॉर एग्जांपल लीवर जो था डाइजेस्टिव सिस्टम में उसने बाइल जूस को सीक्रेट किया था और पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस. सो पैंक्रियाज इज एन एक्सोक्रीन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्रीन ग्लैंड बिकॉज़ पैंक्रियाज आल्सो सीक्रेट्स जूस एंड आल्सो सीक्रेट्स हार्मोन्स. Okay, and which hormone? Insulin. Insulin is the hormone that is secreted by pancreas. Okay, pancreas is the gland, endocrine gland, and insulin is the hormone. Now, what is its function? Insulin hormone, pancreas controls your sugar level, blood sugar level. जब भी किसी का शुगर ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर गिव्स हिम इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन के इंजेक्शंस को देते हैं बिकॉज इंसुलिन से क्या होता है? इंसुलिन कंट्रोल्स आवर ब्लड शुगर. देखिए शुगर क्या होती है? शुगर इज ग्लूकोज. जो ग्लूकोज आपने पढ़ा था, रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था.
तो ग्लूकोज इज बेसिकली शुगर। ओके, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो शुगर भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। व्हेन देयर इज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, insulin converts glucose into another substance. Okay, so that is the function of insulin, to control blood sugar level by converting glucose into glycogen. ग्लूकोज को शुगर को ही स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ऑलराइट, सो पेनक्रियास का जो हार्मोन इंसुलिन है, दैट कंट्रोल्स शुगर लेवल बाय कन्वर्टिंग शुगर ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ये ऐसा तभी होगा जब बॉडी में शुगर ज्यादा होगा। इट मेंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन। ओके, देयर इज अनदर हार्मोन ऑफ पेनक्रियास व्हिच इज नोन एज ग्लूकागोन। दिस इज इंसुलिन, अनदर हार्मोन इज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है? दैट इज द अपोजिट फंक्शन। ग्लूकागोन करता है जब बॉडी में शुगर बहुत कम हो जाती है, शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ग्लूकागोन वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली आपको इंसुलिन ही याद रखना है, बट फॉर एडवांस स्टडीज यू शुड नो दैट पैनक्रियास सीक्रेट्स अनदर हार्मोन व्हिच इज ग्लूकागोन, एंड ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। That was pancreas. Now next gland is adrenaline. Adrenaline gland. So adrenaline gland is present near kidneys. Kidneys से अटैच होती है adrenaline glands. इसका फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। हार्मोन का नाम होता है, सॉरी, adrenal is the gland. Adrenal is the gland. And adrenaline is the hormone. Adrenaline is the hormone. ये पूरे हार्मोन्स और ग्लैंड्स की लिस्ट आपकी बुक में टेबल वाइज दी हुई है। आप उस टेबल से अच्छे से याद कर सकते हो अगर ये कंफ्यूज भी लग रहा हो, पर ये डायग्राम के साथ है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एड्रेनालिन ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालाइन हार्मोन। इसका फंक्शन आप बताइए। स्टार्ट क्लास के स्टार्ट होते ही मैंने एड्रेनालिन का फंक्शन बताया था जो आपने मिस कर दिया। Now you will tell me what is the function of adrenaline. ठीक है? All students write down the function of adrenaline. Now next last hormones are testis and ovaries. Testis and ovaries are the reproductive glands. Okay, testis and ovaries. आपने 8th क्लास में reproduction चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि testis are the reproductive glands and in males and ovaries in females. Okay, so these reproductive glands secretes gametes, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, that happens between male and female gametes. So testis release male gametes and ovaries releases female gametes. Another function of testis and ovaries is appearance of secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? आपने 8th क्लास में पढ़ा था। Secondary sexual characters which are visible between girls and boys, which distinguishes between girls and boys, like appearance of moustache boys, okay, voice, rough voice of boys, okay, sharp voice of girls. So all these are secondary sexual characters which are due to testis and ovaries. Okay, so these all are endocrine glands, and this entire system is endocrine system. Endocrine system. Second question I am asking you. First question was adrenaline function. This is your assignment. Write down function of adrenal. And second is, why do we need endocrine system? जब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत है? ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको लिखना है। व्हाट इज द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? बिकॉज केमिकल्स रीच ईच सेल ऑफ द बॉडी एंड बॉडी कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली।
Okay, so these were various hormones: pancreas, adrenal, testis, ovaries, thyroid. Okay. थायराइड में देखिए आप थायरोक्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन एंजाइम? थायरोक्सिन एंजाइम का फंक्शन देखिए, have you written the function of adrenal gland? Anyone? No one has written function of adrenal gland. So adrenal gland का फंक्शन बाद में देखिए, आप थायरोक्सिन देखिए, थायरोक्सिन का फंक्शन था मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, सो थायरोक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड कब वर्क करती है? थायराइड ग्लैंड वर्क्स by an important element in our body, which is iodine. आयोडीन सभी ने सुना होगा, नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त नमक. उसका एडवांटेज बेनिफिट क्या होता है आयोडीन का? आयोडीन क्यों चाहिए? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, because if there is no iodine, thyroxine will not work. Okay, for working of thyroxine hormone, iodine is necessary, and in case iodine is not present in body, this gland will swell. ये gland फूल जाएगा, और उस फूलने से क्या होगा ग्लैंड को? You will have a disease whose name is goiter. What? Goiter. Goiter is a disease which happens in your body, happens to your body due to deficiency of iodine. Iodine की deficiency से thyroxine hormone will not work and you will have goiter disease. Okay. So these were the various glands. कौन कौन सी glands आपने पढ़ी देखिए? Pituitary gland, thyroid gland, right? Pineal gland, pancreas, testis, ovaries, adrenal. So all of you must know the function of each of these glands. So this was the endocrine system of animals. So coordination was, what was coordination? Working together of various systems, organs in our body. So endocrine system और nervous system जब दोनों मिलकर काम करते हैं, that is coordination. Control and coordination takes place through two systems, nervous system and endocrine system. Both of you have studied. Now you have been studied about. Take a screenshot or make notes. I am going to run this. In animals, you have studied control coordination कैसे होता है, how do organisms respond, okay, to various situations, how do different processes takes place in any organism, nervous system and endocrine system. But in plants में control कैसे होता है, movements कैसे होती हैं? प्लांट्स में कोई न्यूरॉन्स नहीं है. ओके, प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट्स में कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं. देन हाउ डज कंट्रोल टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, बट दे हैव सम हार्मोन्स. They have some kind of endocrine system. Although they do not have glands, but they have some chemicals which we call hormones. So, due to those hormones,
Plants respond. And how do plants respond? Plants do not speak, plants do not run. Plants can have growth or some movements in their branches or leaves. Okay, so there are different kinds of movements in plants. In plants, there are different kinds of movements which are of two types. In plants में हम पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में दो तरह के मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट. आप बताइए मुझे, आपने प्लांट्स में कौन कौन सी मूवमेंट देखी है? प्लांट्स को मूव करते हुए कैसे देखा है? ऊपर, राइट. पहले प्लांट छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है. दैट इज आल्सो मूवमेंट. ओके, आपने देखा होगा some plants have branches which bend towards sunlight. कुछ plants की branches जो होती हैं, जो shoot होता है, वो sunlight की तरफ bend करता है. जो roots होती हैं वो किसकी तरफ? land की तरफ जो है move करती है. So tropic movements are directional movements. अगर प्लांट की मूवमेंट की कोई डायरेक्शन है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स. ओके, दीज मूवमेंट्स कैन आर अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस. जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या हो सकता है प्लांट्स में? प्लांट्स किस किस से रिएक्ट करते हैं? सनलाइट से, वाटर से, राइट, सॉइल से. सो ऑल दीज स्टिमुलस फॉर प्लांट्स. सो मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स कैन बी towards or away from the stimulus. Either it will be towards or it will be away from the stimulus. So tropic movements are directional movements away or towards the stimulus, and these are also based on growth. जब भी कोई ट्रॉपिक मूवमेंट होगी तो साथ में प्लांट की ग्रोथ भी होगी. So these are the two features of tropic movements. Tropic movements are directional movements towards or away from the stimulus, and this is growth based. Okay. Examples क्या होंगे tropic movements की, बाद में देखते हैं. Nestic movement होती है non directional. Nestic movements are non directional, means these don't have any direction, neither they are towards nor away from the stimulus. Okay, and also in these movements no growth takes place. There is no growth. Example क्या होगा nestic movement का? You have heard about छुई मुई plant. जो छुई मुई का plant होता है, इसको हम कहते हैं touch me not plant. Touch me not. ये ऐसा plant होता है जिसको आप touch करते हो तो उसकी जो leaves होती हैं बंद हो जाती है. That's why it is called touch me not plant. So leaves इसकी बंद हो जाती है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. So that's why that is no direction. और ना ही वो leaves बड़ी या छोटी होती है. So no growth. ठीक है. So touch me not is example of nestic movement, no directional and no growth. So let's see examples of both movements. First, tropic. What are the different movements in plants according to stimulus? First is phototropism. Phototropism. Second is photo का मतलब होता है light, sunlight. तो sunlight की तरफ जो movement हो रही है, that is phototropism. Geotropism. Geo means land or soil. So soil की तरफ जो movement, that is geotropism. Third is hydrotropism. Hydro means water. So when plants move towards or away from water, that is hydrotropism. And chemotropism. Chemo means chemical. So these are the various tropic movements in plants. Phototropism, when plants move away or towards the sunlight, that is phototropism.
In plants, there are two parts, generally roots and shoots. देखिए रूट सभी को पता है, रूट्स के ऊपर का जो भी पार्ट होता है प्लांट का दैट इज कॉल्ड शूट. ओके, शूट एंड रूट. सो शूट जो होती है प्लांट की दैट मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट. उधर सन है तो प्लांट की जो शूट होगी उसी तरफ बेंड हो जाएगी. सो शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है. बट जो रूट्स होती हैं, रूट्स डू नॉट मूव टुवर्ड्स लाइट. रूट्स मूव टुवर्ड्स सोइल. रूट्स जो होती है वो लैंड की तरफ मूव करती हैं. सो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ऑलराइट, shoots are positively phototropic but roots, क्योंकि roots phototropism शो नहीं करती हैं, so roots are negatively phototropic but positively geotropic. आप मुझे बताएंगे shoots positive phototropic होती हैं but because these do not move towards earth so shoots are negative geotropic. Okay, hydrotropism होती है movement towards water. तो इसमें भी जो roots होती हैं आपकी, रूट्स जो होती हैं वो भी पानी की तरफ बेंड है. केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल एक होता है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन. आपने 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स में पढ़ा था आपने. पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट मूव टुवर्ड फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवेरी. तो स्टिग्मा से ओवेरी के बीच में जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो एक पोलन ट्यूब बन जाती है. इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी आप इतना याद रखिए, केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब जो कि फ्लावर्स में बनती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म. सो दीज आर द वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट्स. Fessenden has written about function of adrenaline gland, right? So adrenaline gland, blood pressure or response to stress and essential function. Okay, so these are the trophic movements of plants. I hope you have understood. Any doubt you can ask. Okay, now we will go on to nastic movements. What are nastic movements? नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया है, टच मी नॉट प्लांट जो. ठीक है, टच मी नॉट प्लांट. सो एक्चुअली होता कैसे है वो, ये हो गए आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स. नास्टिक मूवमेंट में जो आपने टच मी नॉट प्लांट पढ़ा था, नास्टिक मूवमेंट में टच मी नॉट प्लांट जो था उसमें आप जैसे ही प्लांट को टच करते हो तो वो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आपका टच जो है वो स्टिमुलस, और प्लांट को रिस्पॉन्ड करना है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस. स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही प्लांट को रिस्पॉन्ड करना है. कैसे रिस्पॉन्ड करता है प्लांट? केमिकल से. प्लांट के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, जैसे ही आपने प्लांट को टच किया वो केमिकल क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को लीव्स तक लेकर जाएगा और उस लीव्स में क्या होगा, लीव्स के अंदर जो पानी होता है लीव्स के अंदर, वो बाहर आ जाएगा. जब वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स देन लीव्स बिकम फ्लैसिड. फ्लैसिड का मतलब होता है उसमें से पानी चला जाता है और वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से वो बंद हो जाती है. ओके, दैट्स हाउ टच मी नॉट प्लांट वर्क. व्हेन यू टच द टच मी नॉट प्लांट लीव्स, द केमिकल इज रिलीज्ड इन प्लांट्स. ओके, एंड दैट केमिकल causes movement of water outside the leaves. That's why leaves become flaccid and they close. That is the reason for touch me not plant nastic movement. And tropic movements का reason भी हम पढ़ेंगे. उससे पहले let's see what are the different hormones in plants. Plants के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो हम पढ़ते हैं. तो plants hormones, you can make it, write it down: photo, geo, hydro and chem. तो प्लांट्स के हार्मोन्स जो हैं बहुत ध्यान से पढ़िएगा. प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज ऑक्सिन. AUXIN, ऑक्सिन.
cytokinin, cytokinin. Okay. Third is gibberellins, gibberellin hormone. Fourth is abscisic acid, abscisic acid, abscisic acid. This is also a plant, abscisic acid. Last is ethylene, ethylene. So these are the basically most important 5 hormones in plants: auxin, cytokinin, gibberellins, abscisic acid, and ethylene. Okay, let's see what are its functions. The most important part. इनके functions क्या क्या होते हैं? Please interact to comment box. कुछ लिखो, कोई डाउट पूछ लो. ऑक्सिन का फंक्शन, ऑक्सिन का फंक्शन होता है, देखिए ऑक्सिन प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की जो शूट होती है उसके टॉप पर, जो शूट है प्लांट की जो अपर पार्ट है उसकी टिप पर प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी इट्स फंक्शन? ऑक्सिन प्रमोट्स इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को की जो हाइट है, ओके, डिफरेंट पार्ट्स की जो लेंथ है उसको बढ़ाता है. सो ऑक्सिन का फंक्शन हो गया इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब लॉन्ग करना, इलोंगेशन ऑफ parts. It is present on tips of leaves, stem, branches. Okay, so ऑक्सिन का फंक्शन ये होता है. साइटोकिनिन का फंक्शन होता है, it also helps in growth. देखिए ऑक्सिन भी ग्रोथ कर रहा है, साइटोकिनिन भी ग्रोथ कर रहा है, बट साइटोकिनिन प्लांट की लेंथ नहीं, प्लांट की सेल्स को ग्रो करा रहा है. ओके, सो साइटोकिनिन इज सेल डिवीजन, मतलब प्लांट्स को और ह्यूज बड़ा, ओके, बना रहा है बाय सेल डिवीजन. नॉट लॉन्ग, ऐसे लंबा नहीं, ऐसे बड़ा कर रहा है प्लांट्स को बाय सेल डिवीजन एंड ग्रोथ. ठीक है, जो ग्रोथ होती है डिफरेंट पार्ट्स की, दैट इज ड्यू टू साइटोकिनिन. आप ये सब फंक्शन अच्छे से याद करते हैं. थर्ड हार्मोन इज जिबरलिन्स. जिबरलिन्स is particularly responsible for growth of stem. जो प्लांट का स्टेम होता है, जो प्लांट का तना होता है, उसको ग्रोथ जो कराता है वो है गिबरेलिन, ग्रोथ ऑफ स्टेम. एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फ्लावर्स, फ्लावरिंग. जो फूल आ रहे हैं वो भी ड्यू टू गिबरेलिन्स. ओके, गिबरेलिन्स ग्रोथ. अब नाउ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन हो सकता है? एब्सिसिक एसिड जो है ये सब तो ग्रोथ करा रहे हैं प्लांट्स को और यंग बना रहे हैं. एब्सिसिक एसिड प्लांट को ओल्ड बनाता है. ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है उसकी वजह से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं. सो एब्सिसिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स, falling of leaves and making plant old. ठीक है, उसकी एज को कम करता है एब्सिसिक एसिड. लास्ट इज इथाइलिन. इथाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. जो प्लांट्स के फ्रूट्स जो होते हैं, तो फ्रूट्स को कौन पकाता है? इथाइलिन. इथाइलिन जो हार्मोन होता है, ड्यू टू दिस हार्मोन ripening of fruits takes place. So this is ripening of fruits. Ripening of fruits. ठीक है, so please take a close look at all these hormones and their functions. ये तो 2 मिनट में अभी याद हो जाएंगे आपको. तो एक बार देखो और कुछ समझ नहीं आया प्लीज आस्क. Auxin is elongation of parts, cytokinin cell division, gibberellins growth of stem flowering, abscisic acid, ethylene. अभी तो आपने याद कर लिया, थोड़ा समझ लिया, बट आपको अब ये देखना है कि ये जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, पार्टिकुलरली ऑक्सिन, ये ऑक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लांट्स में जो मूवमेंट हो रही है, दैट मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर ड्यू टू ऑक्सिन. कैसे?
कौन कौन सी मूवमेंट्स आपने पढ़ी? ट्रॉपिक मूवमेंट आपने पढ़ी, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जनरली होती हैं ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। नेस्टिक का रीजन आप समझ चुके हो, दैट इज ड्यू टू वाटर, जब पानी जो है लेक से बाहर चला जाता है, यू कैन से टर्गर प्रेशर, ओके। नेस्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू टर्गर प्रेशर, वाटर प्रेशर, टर्गर प्रेशर मींस वाटर प्रेशर, ठीक है। सो नेस्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू टर्गर प्रेशर, बट ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू, most of the movements are due to oxygen. कैसे? Let's proceed. Note this down. I am going to rub this. Last section of this chapter is function of oxygen hormone. Oxygen hormone इतना important क्यों है? देखिए ऑक्सीजन हार्मोन से जो फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? प्लीज राइट डाउन, कमेंट बॉक्स में लिखो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है। फोटोट्रोपिज्म, तो फोटोट्रोपिज्म इज बेसिकली ड्यू टू ऑक्सीजन। कैसे? व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रांच, ठीक है, तो फाइन प्लांट, किसी भी प्लांट की ब्रांच है, नीचे जो है उसकी रूट्स, ठीक है। तो क्या होता है फोटोट्रोपिज्म? This shoot bends towards sunlight. You can see ये जो शूट है ये सनलाइट की तरफ बेंड हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? That is due to oxygen। और कैसे? एक पॉइंट याद रखिए आप, ऑक्सीजन जो होता है ये ऐसा हार्मोन होता है that likes dark side। इसको ब्राइट साइड पसंद नहीं है, इसको डार्क साइड पसंद है। किसे? ऑक्सीजन। So when sunlight falls on any plant, oxygen hormone shifts towards dark side। और जब इस तरफ हार्मोन जो है शिफ्ट होगा, now tell me what is the function of oxygen? ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का फंक्शन है यस सेल्स को लंबा करना, इलोंगेट करना, ठीक है। So look at this figure। कोई ये स्ट्रेट थिंग है, स्ट्रेट प्लांट का शूट है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाए, एक तरफ ऑक्सीजन सारे हार्मोन शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा? जो डार्क साइड है दैट विल बी लॉन्गर देन द ब्राइट साइड। सो ये साइड जब बड़ी होगी तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन, अगर प्लांट की एक साइड ज्यादा ग्रो कर रही है और एक साइड कम, then it will have a shape like this। You can see एक तरफ ऑक्सीजन इतने ज्यादा हो गए हैं कि प्लांट इतना एक तरफ से हाइट में बढ़ गया है कि it has to bend। इस तरफ से छोटा ही है प्लांट, इस तरफ से बड़ा है, so this plant bends towards sunlight। So what do you say? How do you say when sunlight falls on the shoot, oxygen hormones shifts towards the dark side? So the growth of cells, elongation of cells takes place on the dark side. That's why plant bends towards sunlight. So that is how oxygen promotes phototropism। Oxygen promotes phototropism। There is another kind of tropism which is you have not studied। देखिए टच जो आपने पढ़ा है ना, टच, लाइट को कहते हैं फोटो, टच को कहते हैं हम थिग्मो। थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? एक आपने टच प्लांट जो पढ़ा है ना, टच मी नॉट प्लांट, दैट इज आल्सो थिग्मो, बट वो ट्रोपिज्म नहीं था, वो नेस्टिक था। तो टच मी नॉट प्लांट, जो टच मी नॉट प्लांट शोज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, नॉट थिग्मोट्रोपिज्म। Touch me not plant shows थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। अभी उसका रीजन आप पढ़ चुके हो, अभी हम पढ़ रहे हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो इसका एग्जांपल क्या है? फर्क क्या है दोनों में? एक ट्रोपिज्म है, एक नेस्टिक है।
एक में मूवमेंट है, एक में मूवमेंट नहीं है, एक में ग्रोथ है, नेक्स्ट में ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा कोई प्लांट सोचिए जो थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। कैन एनीवन टेल मी द प्लांट व्हिच शोज थिग्मोट्रोपिज्म? थिंक अबाउट दिस। ऐसा कोई प्लांट जो किसी के टच में आने से, कांटेक्ट में आने से बढ़ता है। यस, मनी प्लांट। मनी प्लांट या फिर कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें बेल हो, जो कि किसी सपोर्ट के अराउंड कॉइल करे। एनी प्लांट व्हिच कॉइल्स अराउंड द सपोर्ट। जो बेल होती है वो किसी भी सपोर्ट, कोई भी आप लकड़ी बीच में लगाते हो, उसके अराउंड कॉइल कर देते हैं। दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म, मनी प्लांट। So thigmotropism is also due to auxin. Auxin promotes thigmotropism. कैसे? See, this is a support. कोई भी आपने प्लांट, मनी प्लांट के बीच में आपने वुड की जो वुड एक बीच में लगा दिया, उससे क्या होगा? जैसे ही मनी प्लांट टच में आएगा तो ऑक्सिन हार्मोन्स, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन डार्क साइड जाता था, वैसे ही थिग्मो में, कांटेक्ट वाले प्लांट में ऑक्सिन उस तरफ जाएगा जिस तरफ प्लांट का कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये है आपका मनी प्लांट, ठीक है, और इसने सपोर्ट को टच किया, ठीक है। सो इधर इसकी जो है ब्रांचेस हैं, so जो पार्ट ब्रांच का कांटेक्ट भी नहीं है, that side auxin, number of auxin hormones are more. So the part of the plant, listen carefully what I am saying, the part of the plant which is not in contact with the support, on that side the growth of auxin hormones is more. Auxin hormones ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, that's why the branch coils itself around the support. इस फिगर पर देखिए आप, क्वेश्चन है हाउ डज थिग्मोट्रोपिज्म टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सिन, या फिर हाउ डज ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। टेंड्रिल होती है बेल, टेंड्रिल क्या होती है? बेल, किसी भी प्लांट की बेल, मनी प्लांट को कोई भी हो। सो how does auxin promote the coiling of tendril around the support? You have to write when any plant comes in contact with support, the part of the plant which is not in contact with the support grows more auxin. The growth of auxin hormones is more at other side of the plant. In this way, the plant coils itself around the support. You have to learn, understand this. Okay, so that's how auxin promotes phototropism and thigmotropism. Any doubt you can ask? If there is no doubt, I am going to give you an assignment. Okay, I will provide you notes and solutions of this chapter. You have to learn that. Okay. Some questions I am asking you. What is the function of insulin? But okay, insulin का function of insulin. Function of insulin. Okay, parts of brain. Parts of brain. Role of auxin. Role of auxin. Names and functions of plant hormones. Plant hormones. Endocrine glands. Endocrine glands. ठीक है, these 5 points you must remember, you must learn. इंसुलिन का फंक्शन है, जितने भी ग्लैंड्स होती है सभी का फंक्शन, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऑक्सिन का क्या काम होता है, प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं,
You all have to study. So this chapter is very important. You get to know about lot of things in our body and plants. So do this chapter very well. Okay. I will give you notes today and you revise those notes and read this chapter from NCERT. Okay. Thank you.